Narayanam on the dais, please. May we have Preeti Sharma I just have one to question felicitate him on the stairs. जब हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे तो आप क्या सीपीटी की किताबें पढ़ा करते थे क्या? Not really. Even I studied comic books and I'm the biggest movie buff here. So I started CPT when I was just 14. So after then, yeah, I had to sacrifice all the fun in life. Thank you. May we have Manisha Verma on stage to felicitate him? Please put on a huge round of applause for CA Avinash Narayanam. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Excuse me, why are you trying to copy Shah Rukh Khan? Excuse me, I'm not trying to copy anyone. I was just speaking about the passion of our next guest for excellence and brilliance. To know the secrets of scoring 100 in accounts, I would like to invite CA Avinash Sancheti, All India Rank 3, with a huge round of applause, whose only mantra of education is learn, unlearn, and relearn. May we have Preeti Sharma on stage to felicitate him? I would now like to invite CA Nitesh Kumar Moore sir, member EIRC on the stage. Sir is the chairman of the Research Committee, CPE Committee, Corporate and Allied Laws Committee, PD Committee of EIRC. Sir has also been instrumental in organization of various company law seminars in Kolkata and nearby areas. So can we have a huge round of applause for sir, please? I would request Ms. Rashmi Agarwal to please felicitate sir. Now I would request CA Nitish Kumar Moore sir to give the introductory remarks. My dear friends, we are here to ensure 100% results of those who are present here, maybe in the next 2-3 terms. We have Nishchal ji, we have Avinash ji, but before they speak, we would like to have, we should analyze what is the present situation. The examination committee members, they are saying that we are giving grace marks. They are also allowing us to have the copy of our answer scripts. Then what is the gap? Where is the gap? Why passing percentage is 5%, 7%, or 10%? What is the present situation? How many of you, let me ask some of the questions. How many of you refer study materials of the institute for all the subjects? Please raise your hands. For all the subjects. Maybe 10%, 20% of you. Rest are not referring the study materials of the institute. How many of you are seriously undergoing practical training of the institute? See, 80% are accepting that they are not undergoing the practical training of the institute seriously. What we are doing now, we have a tuition from 7 to 10, maybe thereafter from 12 to 3, and then maybe after in the evening also. We are not referring about the study material of the institute, we are relying more on the coaching centers. We are not
undergoing, we are not even referring the materials provided by the Board of Studies and on the website, the updated materials. So this is the present situation. Now I would invite two younger speakers to speak something more on the topic. Then I will be giving the concluding event. Thank you. I would now request Nishchal Narayanam, the youngest chartered accountant, to address the gathering. Please put on a huge round of applause for him. A very good evening, everyone. It gives me immense pleasure to be here today. I really want to thank the organizers of EIRC, especially Shri Manish Goyal, for having me here and for making me a part of the event. It's the first time I'm coming to Calcutta from Hyderabad, and it looks pretty much as home, and it gives me immense pleasure to be here today. So last year, I qualified my chartered accountancy, and at the age of 19, which has made me India's youngest CA. And along with CA, I also completed my double post-graduation from Usmania University in Hyderabad in mathematics and commerce, which has made me the youngest double postgraduate at the age of 19. Thank you. So when I was asked to share about my journey, my experiences, it was a very long journey, of course, CA, a 5 years journey, but I had to condense all my experiences into a short speech of 5 minutes. Nishchal Narayanam, Yeah, this is a small area about me. Please a watch living it. genius of India. A question you would ask yourself after knowing Nishchal: is Aryabhatta reborn? At an age of 9, Nishchal spotted an error in his father's company's balance sheet. His mother then recognized the signs of his mathematical and IQ skills. She got him trained under the various methodologies of memory and math. He then went on to perform Ganita Shatavadanam at the age of 9, a rare feat in mathematics. Nishchal has been tested at various levels of memory, not just 10 or 20. He could memorize 225 objects at a time, which earned him first Guinness World Record in 2006 at age of 11. And it didn't stop there. Nishchal went ahead and achieved his second Guinness World Record in 2009 at the age of 13. This made him the youngest double Guinness World Record holder in the field of memory. Nishchal also won the title of the World Memory Champion in the year 2007 at the age of 12, representing India. Nishchal was honored with the most prestigious National Child Award, Gold Medal, for the year 2008, the highest honor given to children under the age of 16 years by the Prime Minister of India. Nishchal was accredited by National Geographic Channel as one of the 7 brilliant brains of the world. His achievements were appreciated, printed, and broadcasted by various national and international print and electronic media. At an age of 10, he authored several books on school mathematics, designed and developed mathematics laboratory. He went on to start his own company, Nischal's Smart Learning Solutions, which deals with innovative educational products. He is a pioneer to mentor curriculum-oriented micro-scale portable school laboratories for physics, chemistry, and biology as well. His company is empaneled by Government of India's NCERT, and his products are being used in more than 200,000 schools across the globe. All this at an age of 19.
Nischal completed classes 8 to 12th grades in one academic year from the Cambridge University, UK. Mathematics is his passion. Commerce is his profession. Nischal became the youngest graduate in commerce at the age of 16 and the youngest double postgraduate at the age of 19. He now has become the youngest chartered accountant at the age of 19 and the youngest to complete articleship among 200,000 members of the world's largest audit firm, Deloitte. Nischal always believes in giving back to the society, and hence, Nischal Foundation today organizes free residential summer camps for deserving children from the weaker section of society and promotes literacy in remote areas. He also conducts maths tests every year for thousands of children and presents them with Nischal Math Genius Awards. Nischal's ideology, be determined, be focused, and be patient, has inspired many youngsters and continues to be the role model of India. Legends are not born every year, nor in every generation. Nischal fills that space as the exemplar of Generation X. Thank you. So my journey began when I was just 9 years old. Oh, thank you. Thank you. Thanks a lot. So my journey began when I was just 9 years old, as you watched in the AV. I was always passionate about numbers. Mathematics has always been my core area of interest since my childhood. But although I was interested in mathematics, my father being an industrialist and my mom being an academician, I always had equal passion for commerce too. And that's what has made me inspired to do CA. At the age of 9, that was when my father first exposed me to financials. When my co-peers were in their 4th grade, I was looking after my father's financials, what is a balance sheet, what is a profit and loss account. And when he was going through the financials, that was when I first identified a small calculation mistake in the statement. That was when my mom identified that I really have good mental mathematical skills, and she realized if I was encouraged in that direction, I'll definitely do well. That was when she decided to get me trained in mathematics. Thank you. So what we learn in school is just like one side of the coin of what mathematics is concerned, but there's much more to mathematics than that. The different methodologies around the world in math, like the Vedic mathematics of India, or the abacus of China, or the Trachtenberg systems of Germany and Russia, etc. So after getting trained in all these different methodologies, I went on to author books on school mathematics when just 10 years old. And after that, I was inspired to design a product called Math Lab, a laboratory for mathematics. I realized that when in schools, we have laboratories for sciences, for physics, chemistry, biology, even for languages, why not for math, when a lot of young students have a phobia towards a subject. After designing this math lab, I went on to achieve my first Guinness World Record in the field of memory at the age of 11, and then second record at 13. And that was when the National Geographic Channel shot a documentary on me called The My Brilliant Brain, and they chose me as one of the 7 brilliant brains of the world. Thank you. But apart from all these achievements, definitely one of the most memorable achievement of mine was winning the World Memory Championship in Bahrain representing India. Memory is like a mind game. Anyone can get trained in it and can definitely do well. Actually, after my speech, I thought of giving a small memory show here just to inspire a lot of students and just to show the power of human brain, power of focus. So I hope you all like it. And after the National Geographic Channel chose me to be a part of the documentary, the central government, they have chosen me to felicitate with the National Child Award, the highest honor which is given to the children of under 16 years of age. When I was 13 years old, I was felicitated by the President of India, the then Abdul Kalam ji. And talking about my academics, till my 7th grade, I did my regular schooling. After that, I shifted to the Cambridge University board, the UK board,
from where I completed my classes 8, 9, 10, 11, and 12, all in just 1 year. After my 12th, I actually wanted to go abroad for my undergraduation, but generally you're about 17 to 18 years old when you join for your undergraduation. I was just about 12 and a half. So the UK universities had put a condition and they required me to get a parent guardian along with me, which was not possible. But that was definitely a blessing in disguise. And if they wouldn't have objected, I wouldn't have stayed back in India, I wouldn't have joined CA. So there was definitely a blessing in disguise. And when I stayed back, when I decided to join chartered accountancy, I definitely didn't know what I was getting into. I definitely didn't know the depth of the course or the magnitude of the gravity of the expectations on the students. But definitely, it was like jumping into an ocean and then learning how to swim. I began to prepare for my CPT. I just had 13 days time after my 12th boards. I cracked my CPT when I was just 14, and then went on to do my IPCC at the age of 15. And after I cleared my IPCC, I worked at Deloitte for 3 years. I did my articleship at Deloitte. I completed my articleship by 18, and then I qualified my finals by 19. So this has been my CA journey. I really believe that CA is definitely one of the toughest and the longest courses in commerce, but definitely, although it has been very challenging, the amount of knowledge, the amount of experience, the value addition to your personality, not just your knowledge, is immense. The other day, when I was talking to one of the co-speakers, Avinash, he was mentioning that during CA, a lot of students have a very negative attitude and they always feel really bad. Oh my God, we're missing so much in life. We are doing a lot of sacrifices. Is it really worth it? But I just want to assure you that once you pass out, the amount of happiness, the amount of satisfaction what you get is priceless, and every sacrifice you have made is definitely worth it. I strongly believe that CA is a course which not only tests the professional competency in the examination hall, but it tests the endurance, willpower, and patience of a student. Especially after passing out IPCC, managing your work, your articleship, your classes, your self-study, all together, and especially during the preparation of the final, the last 6 to 8 months, where you have to dedicate yourself completely to the course, completely to the examination, and you have to prepare for more than 10 to 12 hours a day. At that point of time, a lot of students definitely, somewhere along the journey, they get restless, they get impatient, and that is the main factor behind them quitting the course or discontinuing CA. I strongly think that CA, along with the professional competency, it definitely tests the students' willpower and patience, and success only comes when you're patient. Yeah. I always believed that when you go to a grocery store and you want to buy something, you pay the price in the form of money. And if you want to buy success, you have to pay the price in the form of hard work, dedication, and determination. I strongly think that once you pass out, the amount of respect, the professional recognition, and the happiness is definitely much more than what you would have expected. One more advice for a lot of students that I got to know that who are doing IPCC and who are pursuing the final is that articleship is one of the biggest boons for CA students, because at a very, very young age, we are getting exposed to the corporate sector, and definitely my experience with Deloitte has been of immense value addition. Starting from basic characteristics like, being punctual, or the way you dress up, or the way you talk to clients, and the way you handle things, to bigger aspects of getting the technical knowledge or understand the nature of business. Every aspect of articleship is definitely an element which you all should enjoy. And what I've really observed is a lot of students, when they start working, they restrict their scope of work to only the domain where they're handling. For example, like in big clients, when you start working in big clients, when you have a big team of audit or tax, the work gets allocated between the different people. Like one guy handles fixed assets, or one guy handles the revenue, one guy handles the liabilities, etc. I strongly think if you're restricted
when you have the perspective of restricting yourself to just the work you want to do, then definitely you won't get the macro perspective. I strongly feel that as an article student, you're getting a fantastic opportunity which no one else would get. You're getting access to the most sensitive and confidential information of a company. And don't just restrict yourself to the area of work. Try to explore more than just your area of work. Try to get a macro perspective. Try to understand the dynamics of the different industry. I myself, I just want to share an experience. When I was working in Deloitte, I had to go and visit a client that is Mahindra. I myself am a very, very big fan of automobile industry. So when I got assigned to that client, I was very, very happy. And I went to their plant, the assembly plant, for a stock take. I knew that my work would get over in a day, but we had 2 days time. So on the second day, instead of coming back, my other friends, they were insisting that because we finished the work, let's wrap up and let's leave. I was insisting that if this is an opportunity which would anyone would get only once in a lifetime, so why should we leave? We'll just stay back and look around the factory, go explore what exactly goes into the automobile industry. Like more than 30,000 components actually go into assembling a car. More than 18,000 components go into assembling a three-wheeler. When I was understanding the nature of business of the client and the dynamics of the industry, that time I realized that we should not just restrict to our scope of work, but we should definitely have a macro perspective to do more, to achieve more. Today, I strongly think the corporate sector, there's been a new terminology which everyone is calling VUCA. That's volatile, uncertain, complex, and ambiguous. That's what the present scenario is in. Of course, there's lots of optimism around us, but definitely there are too many variables which control the success factor, there are too many critical success factors, and we are living in a VUCA world. And in today's scenario, I think CAs definitely play an extremely important role in a financial system of an economy, and we have a huge responsibility on our shoulders to be updated with the latest knowledge, the trends, amendments, and changes on a global platform. I strongly think that along the way, along the journey of your chartered accountancy, I hope you cherish every moment of your journey, because the knowledge, what is being imparted to you during this journey, what the values which are being inculcated in this journey, that will definitely help you go a long way, and definitely you would evolve as a person by the time you pass out. I'm really happy to see a lot of girls here. Even back in South, a lot of girls are taking up CA, and I do believe girls would make great chartered accountants. A mother is a born accountant. The way she plans her house, the way she plans her expenditure and savings, I definitely think without mother's savings, Indian economy wouldn't have been as strong as it is today. So I really think girls would really make great chartered accountants. And the perspective, I don't know what, about the students here, but back in South, there's too much of pressure. Definitely, all India is the same perspective. A lot of pressure on the CA students to pass the examination. But along the journey, everyone is missing out on a common element. That is, no one is actually enjoying gaining knowledge or gaining that value addition to your personality. I strongly believe that more than anything in this world, more than wealth, power, name, fame, the strongest value addition to a personality is your knowledge. I think knowledge is the only fixed asset which doesn't depreciate. And I really think that if you pursue your course with the academic passion, academic flair, to genuinely believing that after learning, after passing out, you would genuinely make a value addition to the society, to the people around you, then definitely you would change that perspective. You would be much more interested in doing what you're doing right now. And don't just restrict yourself to the traditional areas of audit or taxation. There's so many opportunities opening up today. Audit and tax have always been fantastic, and they will continue to be so. But there are so many opportunities, other opportunities opening up, like investment banking, consulting, M&A, financial analytics, so many areas opening up. I really think after passing out, CA is not like a lifetime achievement. It's just a starting point. After passing out, there are a million more opportunities to be explored, a million more things to be achieved. I really think CAs would make great entrepreneurs,
I definitely advise a lot of people to explore the entrepreneurship abilities in you, because definitely we make great administrators. And a lot of students back in Hyderabad who have cleared CA are also getting into civils these days. And I'm very confident that they would make great administrators in civils also. So exploring the different opportunities after CA and exploring different perspectives is very, very important. I just strongly believe that the main success factor in CA is the planning, is the execution. I've read a quote somewhere which says, vision without execution is an illusion. So planning is extremely important. At the same point of time, implementing and following the plan is also equally important. Plan ahead, plan properly, well in advance, especially during your final level, at least 6 to 8 months before the examination. And I advise you to have lots of practice, lots of readings, and at least revise whatever the content you have been taught at least 4 to 5 times before the examination. And that duration of 4 to 5 months or 6 months before the examination, that is the most crucial phase determining your success, determining your future. So have clarity of thought of what you want to achieve, what you want to be, and accordingly plan and execute the plan. And I strongly think that if you are not planning your future, then I strongly think that you don't believe you have a future. Only then we fail to plan our future. So never ever fail to plan. Always stick to your agenda, stick to your core targets, stick to your objectives, and I can assure you that every night out you have made, or every movie you have sacrificed, every party you have sacrificed, ultimately, once you pass out, the happiness is something different. I strongly believe that you all have the great potential to achieve, and I once again want to thank the organizers for giving this opportunity, and I want to do this small memory show before you all, and I hope you all like it. Thanks a lot. Thank you. I would now request CA Avinash Sancheti to speak on his words of wisdom. Please put on a huge round of applause for CA Avinash Sancheti. कैसा लगा? निश्चल कैसा लगा? जोर से। मेरे पास इतनी डिग्रियां नहीं है। As the coordinator said, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। Not being so qualified, I won't be speaking on what strategies you should adopt to be a CA, because हर जन की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। 3 महीने पहले ये पढ़ो, 6 महीने पहले ये पढ़ो, ये बोलना मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली। अगर मैं कुछ बोलता हूँ वो कुछ लोगों के लिए लागू होगी, बट सबके लिए लागू नहीं हो सकती। सबसे पहले इस सेशन का जो टॉपिक है वो है सक्सेस स्ट्रैटेजीज फॉर सीए स्टूडेंट्स। क्या सीए बनने से सच में आप सक्सेसफुल हो? आंसर, सीए बनने से क्या आप सक्सेसफुल हो? मैं सीए बन चुका हूं बट आई एम नॉट सक्सेसफुल। एकदम करेक्ट पॉइंट बोल रहा हूं, मैं सीए बन चुका हूं, आई एम नॉट सक्सेसफुल। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी। मैं जो भी बोलूंगा 15-20 मिनट, मैं स्टोरीज सुनाऊंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा। अगर आज इस एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं तो मैं बोल रहा हूं सीए तो पास होगा ही 100%। कुछ नहीं है इसमें। लाइफ में बड़ा बनना है तो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले सक्सेस क्या है? किसी के लिए सक्सेस है सीए बनना, किसी के लिए डॉक्टर बनना, किसी के लिए पैसा कमाना, किसी के लिए स्टेटस हासिल करना। मेरे पापा अगर धीरूभाई अंबानी या फिर मुकेश अंबानी होते तो मैं शायद बिना कुछ किए ही सक्सेसफुल होता, अगर मनी वॉज सक्सेस। सक्सेस इज
something you have dreamt of and you get happiness when you achieve it. सीए बनने से आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, दैट्स अ मिथ. क्योंकि सीए सिर्फ एक जरिया है. अभी तो स्टार्ट हुई है लाइफ, अभी बहुत कुछ करना है. बीइंग अ सीए मैं चाहता तो जॉब कर सकता था अलॉन्ग विथ, एक्चुअली पता भी नहीं है सबको और बताना भी नहीं चाहिए, बट मेरा सीए में ऑल इंडिया रैंक 3 है. फाइनल में आईपीसीसी में कोई रैंक नहीं था, सीपीटी में भी कोई रैंक नहीं था क्योंकि वो जील ही नहीं थी. सीएस में भी मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ और सीएस फाइनल में मैं ऑल इंडिया रैंक 5 हूँ. अब हो सकता था, मुझे बहुत जनों ने कहा भी और मैं जिनकी बात सुनता हूँ उन्होंने भी मुझे कहा जॉब कर ले बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी, 1 साल 2 साल इंडिया, उसके बाद तेरे को बाहर भेजेंगे, पैसा कमाना, फंड मैनेज करना. बट कुछ और इच्छा थी, पढ़ाना था, पढ़ाने में घुस गया. प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही आप सीए बन जाते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी स्टार्ट्स. वो सब एक्सपेक्ट करने कर लगते हैं पैसे कब कमाओगे आप, और मैं एकदम पैसे नहीं कमा रहा हूँ, अभी तो वेस्ट ही कर रहा हूँ. कोई भी चीज़ में हो मैं वेस्ट कर रहा हूँ. शायद एसेट्स खड़े हो रहे हैं, शायद गुडविल खड़ी हो रही है, पर टेंजिबली कुछ नहीं दिख रहा है. तो क्या मैं सक्सेसफुल हूँ अगर सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना होता? नहीं. बट मुझे हैप्पीनेस मिलती है करने से. आप कोई भी चीज करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, वो आप उस चीज में सक्सेसफुल हो. अब जो लोग फेल होते हैं वो फेल क्यों होते हैं? फेल होने के 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं. इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा. 3 लोग थे, तीनों स्विमिंग पूल के पास बैठे थे. स्विमिंग पूल गहरा था, तीनों को स्विमिंग नहीं आती थी, पर मन बहुत था स्विमिंग करने का. आप लोगों ने सुना होगा, बट आई लाइक दिस स्टोरी सो मैं बोल रहा हूं. पहला आदमी स्विमिंग करने जाने से पहले सोच रहा है पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत ठंडा है, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, अगर मैं गया मैं डूब जाऊंगा. पहले ही डर गया. और आप जानते हैं एज द फेमस डायलॉग गोज, जो डर गया समझो मर गया. वो पानी में उतरा ही नहीं, पैरालाइज्ड हो गया डर से. वो पैरालाइज्ड मतलब स्विमिंग नहीं कर पाएगा. अब स्विमिंग, वो जिंदगी भर उसने स्विमिंग नहीं की. दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाई पीपल फेल. उसने सोचा तो था स्विमिंग करने का, बट वो कर नहीं पाया. दिस इज थिंकिंग विदाउट एक्शन. द फर्स्ट पाथ to failure, thinking without action. You may think a lot, but if you don't have actions, you won't succeed in life. The second person, he was a 30 मार खान. आप लोगों में भी कुछ ऐसे होंगे, टीवी पे बैठ के बोलते हैं विराट कोहली जब छक्का नहीं मार पाता है, यार उसको उतार, मैं जाता हूँ खेलने. होता है. मेरा छोटा भाई क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी है, उसको अगर मतलब मुझे गुस्सा दिलाना है तो मैं यही बोलता हूं. बट द रियलिटी गोज द अदर वे. दूसरा आदमी क्या बोलता है कि यार सब स्विमिंग कर रहे हैं, इजी काम है, क्या हुआ नहीं आता तो, और कूद जाता है. आपको पता है उसका क्या होगा? या तो वो निकलेगा नहीं, अगर किसी ने निकाल लिया तो 2-4 थप्पड़ मारने के बाद पूछेंगे भाई स्विमिंग आती थी, बोलेगा नहीं, तो कूदा क्यों? These are the second persons who fail. The people who do action without thinking. कर दिया पर सोचा नहीं. These 2 paths leads to failure in life. The first one thinking without action, the second one action without thinking. तो आप कभी भी लाइफ में कुछ भी करो, ये 2 चीज हमेशा याद रखना, and 100% सक्सेस है. The third path, the third person, उसने क्या किया, इन दोनों को देखा, पहला गया नहीं, दूसरा डूब गया. तो what he did, he started asking the person who was swimming. He took an idea. He asked them, आप लोग सीधे यहीं आके swim कर रहे हो क्या? They said no. There is a shallow pool. We went there first, and now we are swimming here because we have done a lot of practice. He went to a shallow pool. He learned swimming. He came to the pool. And he practiced. This third person, is he successful? Yes, he is successful than the other 2. The first one,
action without thinking, thinking without action. But he passed and he did swimming. Why? Because he followed the rule of learning. जब मैं बोलता हूं लर्निंग, तो बहुत जन के अंदर का चतुर रामलिंगम जाग जाता है. बुक खोली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूं लोग उजाकर. बट ऐसा होता नहीं है. मैं जब लर्निंग बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. विदाउट ऑब्जर्वेशन यू कांट लर्न. खुद की गलतियां क्यों करें, दूसरों की गलती से क्यों नहीं सीखें. द सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग. ऑब्जर्व कर लिया, अब उसको समझना है करते कैसे हैं. एंड द थर्ड वन इज प्रैक्टिस. इफ यू वांट टू लर्न इन लाइफ, you must have these 3 things: observation, understanding and practice. And if you can do this, the success आपके कदम चूमेगी. 100% सक्सेसफुल रहेंगे आप. लिखवा लो मुझसे. अब क्या है, सक्सेस के कुछ और मंत्र हैं. सबसे पहला मंत्र आप में नहीं है. मंत्र आप में नहीं है. मंत्र दूसरे लोगों को चुप कराने में है. स्टोरी सुनाता हूं. 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 10 साल का. दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं. सब कुछ का पीते हैं, पानी पीते हैं एक्चुअली. सब कुछ करते हैं साथ में. तो वो एक दिन खेलने निकले. खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए थे. अब क्या हुआ, खेलते खेलते बड़ा वाला दोस्त कुएं में गिर गया. छोटा वाला दोस्त डर गया, क्या करूं. उसने आसपास देखा, आसपास कोई ना था. उसे एक बाल्टी दिखाई दी, बकेट. उसने कुएं में बकेट डाल दी एंड अपने दोस्त से कहा जोर से पकड़ ले. अब समझिए, एक 6 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा. टेक एन एग्जाम्पल. 6 साल वाला बच्चा निश्चल है, 10 साल वाला बच्चा मैं हूं. साइज तो देख ही सकते हैं फर्क. तो 6 साल वाला बच्चा हिम्मत करके तब तक टानते गया जब तक वो 10 साल वाला फ्रेंड बाहर नहीं निकल गया. बाहर निकल गया, बच गए. उन्होंने बहुत खुशी मनाई. बट उनको डर लगा. क्या डर? घर जाते ही मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, घर जाते ही मार पड़ेगी. घर गए पर उनको मार नहीं पड़ी. क्यों? क्योंकि उनको मम्मी पापा को लगा मनधड़क कहानी बना रहे हैं. एक 6 साल का बच्चा जो बकेट नहीं उठा सकता, वो 10 साल के बच्चे को क्या खींचेगा. सबको कहा, किसी ने नहीं माना. कोई ना कोई तो अच्छा आदमी, बुद्धिमान आदमी रहता है. तो उन दोनों ने वो स्टोरी एक चाचा को सुनाई. गांव के सबसे बूढ़े चाचा थे, उनको सुनाई. उन्होंने मान ली. तो लोगों को लगा चाचा बुढ़ियापे में सटिया गए हैं. क्यों? 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है. तो सब चाचा के पास गए. चाचा से पूछा, आप कैसे मान लिए कि इन्होंने ये कर लिया, ये लोग कर कैसे सकते हैं. चाचा ने कहा, ये बोल रहे, ये लोग ने वैसे ही किया है. बोला, नहीं चाचा, हम नहीं मानते. तो चाचा ने कहा, हम इंसानों की प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने कैसे किया, हम इंसानों की प्रॉब्लम है कि हम ये सोच नहीं पा रहे हैं वो क्यों कर पाया. वो 6 साल का बच्चा ऐसा क्यों कर पाया कि उसने 10 साल के बच्चे को खींच लिया. एंड चाचा आंसर्ड, उस 6 साल वाले बच्चे के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे बता सके कि वो ये नहीं कर सकता. उस 6 साल वाले बच्चे के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे ये बता सके कि वो नहीं कर सकता. There are many negative peoples in and around you. There are people who will always be saying you, तुम ये नहीं कर सकता. And if you want to be successful, you have to leave those people back. चाहे दोस्ती टूटती है, टूटने दीजिए. चाहे लोग रूठते हैं, रूठने दीजिए. बट वैसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए. क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे, आप सक्सेस नहीं पा सकते. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. सीए फाइनल से भी पहले मैंने 3 महीने तक किसी से बात नहीं की थी, अपार्ट फ्रॉम माई 2 फ्रेंड्स.
one who is with me now, he is also teaching with me, and a other friend because I have a faith on him. क्यों लोग यही बोलते हैं यार बताना पढ़े कैसे, सबने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आपकी बारी है, तो किसी से बताने का और किसी से पूछने का जरूरत नहीं है. So give up negative people. The second mantra. How many of you know about Mohammad Ghuri and Prithvi Raj Chauhan? We are Indians, being sentimental, and to all of you, I like the personality of Mohammad Ghuri. अगर मेरी हिस्ट्री गलत है सही है पता नहीं, 2 मेन बैटल हुए थे, बैटल ऑफ तराइन, एंड बीच में 13 से 14 कन्फ्रंट्रेशन हुई थी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घुरी के बीच. मोहम्मद घुरी 14 से 15 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा होगा, बट लास्ट बार सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. अच्छी बात है कि खराब बात? इंडियन होके मत बोलो. अगर आप आदमी होते, आप वहां होते, लड़ रहे होते, 14 बार हार के 15वीं बार किसी को हराना अच्छी बात की खराब बात? अच्छी बात. तो अगर सक्सेस पाना है, द मेन वर्ड इज नेवर गिव अप. नेवर गिव अप. एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार तो चैलेंज है होगा. द प्रॉब्लम विथ अस बीइंग सीए स्टूडेंट्स इज, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 15-15 बार कर रहे हैं, करना भी चाहिए. 5 साल की मेहनत, 3 साल की आर्टिकलशिप के बाद अगर आप नहीं करते तो आपने अपने टाइम का, लाइफ का वैल्यूएबल फेस वेस्ट कर दिया है 18 से 23 साल वाला. कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार किया नहीं हुआ छोड़ दिया. सीए फाइनल में मैंने ऐसे लोगों को देखा है. आप उन्हें कुछ भी कहो, चाहे कोई भी रीजन हो, बट ये जो गिव अप वाला एटीट्यूड है ये आपको सक्सेस की तरफ ले जा नहीं सकता. अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, आपने किसी मकड़ी स्पाइडर को देखा है? अगर एक मतलब क्या बोलता हूं, सरफेस प्लेन हो, सीधा सरफेस हो, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है. आप उसको देखो, वो अपने वेब्स बना बना के, चाहे वो 20 बार गिरता है, बट वो लास्ट में ऊपर तक जाके ही दम लेता है. दैट इज द नेवर गिव अप एटीट्यूड. अगर एक छोटा सा इंसेक्ट लाइक अ स्पाइडर कैन डू दिस, व्हाई कांट वी? So the second main thing is never give up. The third thing, as Jay sir said in the session prior to this, CA में आने के बाद co-curricular activities, interest and hobbies change हो जाती है. Co-curricular activities from playing cricket to watching cricket. Co-curricular activities from playing cricket to watching cricket. And there are many CVs when forwarded to big corporates. I don't know all this. I have been learning in GMCS sessions. Many CVs forwarded to corporates, they write their hobbies as playing cricket, watching cricket, sorry. Can watching cricket be a hobby? So, अपने को अपने इंटरेस्ट, हॉबीज, को करिकुलर एक्टिविटीज को पीछे नहीं छोड़ना है. अभी जो आईकासा के मेंबर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, अभी नहीं लग रहा उसका फायदा क्या होगा, बट अगर आपने स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनी हो तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. जो आज ये कर रहे हैं, क्या पता किसी दिन ये कॉर्पोरेट में जाए, वहां एक बड़ा इवेंट हो और उसे मैनेज करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला कोई ना हो. देन हु विल बी द विनर? जिसको आता है आईकासा मेंबर्स. Who will be the champions? Who will get promotions? ये छोटी छोटी बातें जो हम अभी कर रहे हैं, ये बाद में जाके ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, and then they will lead to your success. So don't ever leave your interest and hobbies in between the studies we are doing. और ये studies के बारे में अगर बोलूं यार, इतनी सिंपल है. जो IPCC में पढ़ता है वो फाइनल में रिपीट होता है. अमलगमेशन जैसा चैप्टर 16 मार्क्स का सम इंस्टीट्यूट देती है. अब इफ यू आर ऑल सीए फाइनलिस्ट, वो 16 मार्क्स का चैप्टर मैं आईपीसीसी में करके आ चुका हूं. मुझे पढ़ने की क्या दरकार है? पढ़ाई के साथ साथ इंटरेस्ट, हॉबीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज आर अ मस्ट. In every CV there is a column of interest and hobbies, and big corporates like ITC even, वो नहीं लेते हैं अगर आप एक्टिव हो.
अलग अलग चीज़ों. I have one friend of mine from PwC. He was rejected in the ITC interview, though being all-time rank holder in CS, CPT, IPCC and finals, because of some issues like this. So वो वाला जो इंटरेस्ट हॉबीज करने का है वो आप कीजिएगा, उसको छोड़ने का दरकार नहीं है. अभी इन दिनों एक गेम बहुत फेमस है. क्या गेम का नाम है? पोकेमॉन गो. कौन किसने बनाया? जॉन हैंक. इनका जो ये पोकेमॉन गेम इतना बड़ा बना, उसका कारण ही उनकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज. ही इज बीइंग एसोसिएटेड विद गूगल. ही वॉज वन ऑफ द पीपल बिहाइंड द गूगल अर्थ ऐप. बट उनको गेमिंग बनाने का एक अलग ही शौक था. उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग में जो गेम बनाए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो गेम खरीद लिए. एंड वो 20 साल मेहनत के बाद अब जो पोकेमॉन गो गेम बना है, $1.6 मिलियन पर डे उसकी अर्निंग है, रेवेन्यू है. तो ये सब छोटी छोटी चीजें डॉट्स कनेक्ट होके कब बड़ी बनेंगी आपको पता नहीं चलेगा. नेक्स्ट, प्रॉब्लम विद सीए स्टूडेंट्स एंड हाउ टू मैनेज दिस. हमारे टारगेट्स होते हैं सीपीटी में 200 में 120, 60%. आईपीसीसी में 700 में 350, 50% की पास हो जाए बस. सीए फाइनल में 800 में 400. हमारे टारगेट्स इतने लो क्यों हो गए हैं? सीए की रेस्पेक्ट इतनी हाई है बट हमारे टारगेट्स इतने लो है. अगर आपको सक्सीड करना, आपके टारगेट्स हाई होने चाहिए. ये टारगेट्स हाई कैसे सेट करें? इफ यू हैव हर्ड अबाउट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एक्चुअली. I have a friend, he's a weird friend of mine, Navneet Mundra. He used to take his target, write a target in piece of paper and अपने अलमीरा में चिपका देता था. And trust me, क्लास 12 से लेके सीए फाइनल तक उसके वही रिजल्ट्स है जो वो सोचता था. मैं सीए आईपीसीसी में रैंक नहीं ला पाया, कोई टारगेट ही नहीं था लाइफ में. सीए फाइनल में जिस दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने मेरे फ्रेंड को बोल दिया मुझे 560 चाहिए. अब देखो टारगेट सेटिंग अप्रोच देखिए. अगर टारगेट मेरा रैंक होता तो प्रॉब्लम क्या होती? मेरे टारगेट वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द टारगेट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग. क्योंकि रैंक के लिए सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा हूं. 10,000 लोग जो एग्जाम देंगे, लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो सब उसी के ऊपर लड़ रहे हैं. तो मैंने मेरा टारगेट रैंक नहीं सेट किया, क्योंकि मेरा टारगेट किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो मैं अचीव कैसे करूंगा? I set my target as a 560 mark, कि अपने को 560 लाने का है. And my marks in CA final were 566. This is the power of law of attraction. The moment you start saying yourself कि मैं नहीं कर पाऊंगा, the moment you start failing. तो believe in yourself, believe in the law of attraction, believe in what I said, and I bid you all the best for tomorrow's result. All of you will pass, and passing CA is not just life, it is just a part of life. The main life is happiness. Be happy, be satisfied. Thank you so much. It was fantastic. That's my mother. Definitely behind every child's success, the family support plays a crucial role. I'm really lucky that I've got a very supportive family, my dad, my mom, and my brother, and everybody. And I would like my mom to talk. Yeah.
Good evening. Just a small memory show Nishchal would like to perform here, by which you can understand the real power of brain. Human brain is most powerful. Just a 5 minutes memory show. I want one chair to be placed here. Earlier, some numbers were collected from the members here, and I would read these numbers to Nishchal, which are going to be displayed on the screen. Nishchal, are you ready? Yeah, go ahead. In which he achieved his Guinness record. Just a piece of it for you. Nine two 92. Okay, 86 86. okay, 54 54. okay, 13 13. okay, 08 okay, 76 76. okay, 12 12. okay, 91 91. okay, 11 11. okay, 23 23. all right, 72 72. okay, 55 55. okay, 86 86. okay, 56 56. okay, 33 33. okay, 15 15. okay, 0 0. okay, 93 93. okay, 81 81. okay, 90 90. okay, 45 45. all right, 18 18. okay, 16 16. okay, 75 75. okay, The last number 51 51. okay. So the totally 50 numbers. Yes. Okay, I'll try to recall all the numbers now in the same order. Yes, please. 92, Yes, 86, correct.
54, Yes. 13, Yes. 08, Correct. 76, Yes. 12, Yes. 91, Correct. 11, Right. 23, Yes. 72, Good. 55, Yes. 86, Correct. 56, Right. 33, Yes. 15, Yes. 00, Right. 93, Good. 81, Yes. 90, Yes. 45, Right. 18, Correct. 16, Right. 75, Yes. 51. Yes. Thank you. Thank you. This is power of the brain, as I said, and it is not impossible to achieve. And he did it in a straight order, like driving a car. Going straight is little easy, but going reverse is much more difficult, isn't it? So the control on your brain, you want him to do that? What, Oh, Nistal? Are you yeah. ready? Yeah, so I'll try to recall all the numbers in the reverse order now. So the last numbers are 51. I would be reading as 15. Yes. 15, Correct. 57, Correct. 61, Yes. 81, Yes. 54, Correct. 09, Yes. 18, Yes. 39, Yes. 00, Correct. 51, Correct. 33, Yes. 65, Correct. 68, Yes. 55, Yes. 27, Correct. 32, Yes. 11, Very good. 19, Correct. 21, Correct. 67, Yes. 80, Correct. 31, Perfect. 45, Correct. 68, Yes. 29. Yes. Thank you. Thanks a lot. And thank you. I wanted to say one more thing, which I purposely didn't tell in my speech. I wanted to tell after the memory show. I really believe in effective studying. This can be achieved by everyone sitting right here. It's all about focus and concentration. And when you have 100% undivided attention on anything, anything is possible. And
especially during my preparation, when all my friends and all, we used to plan to sit for 8 to 12 hours a day. I never used to have the patience to sit for 12 hours in the same chair. And I used to try to complete as soon as possible. And that effective studying is what is really important. Trying to avoid all the distractions. And like when you're studying and you get a text and you get distracted, you try to reply and you wait for the other person's reply. And after 10 minutes, your concentration is completely disrupted. So that's what happens. You try to take a break for 5 minutes, which goes on forever. So all these are very, very common when we are preparing for an exam. But undivided attention is what is extremely important. I used to have a study room in my house, and during my preparation, once I enter the study room, like I don't even allow my shadow to disturb me, literally. I try to focus as much as possible, and that effective studying, that quality study is what is extremely important. And once you have concentration on what you're doing, you can achieve anything in life. Thanks a lot. Thank you. एक छोटा सा एग्जाम्पल, like his concentration, as he said, how it is, the concentration. Like in hot summer, in the month of May, 12 o'clock in the afternoon, it's like scorching. अपना जल जाता है ना skin. And if you put a magnifying glass, नीचे से और भी बहुत गर्मी होता है और the paper burns. So his concentration is like that. Anything and everything can be achieved if you focus. Please have focus and patience, and he is a live example. Thank you very much. Thank you, Nishchal. Thank you, ma'am, for that amazing performance. Can we have a huge round of applause once again, please? Now I request our moderator for the session, CA Nitesh Kumar Moore, to please conclude this session and offer his vote of thanks. Can we have some questions from the floor? I would like, there should be some participation from the floor. Anyone wants to ask Nishchal or Avinash something, or me? No questions at all. So there is a cultural program, everybody is waiting for that, I think. So I would conclude by saying that the key to success is whenever you get your study materials, you should start studying from that day, maybe 3-4 hours from that day. You should have your practical training, serious practical training that you should have. Thank you everybody. This wonderful speakers, you must have again decided in life that, okay, everything can be achieved. And as we have got the theme of the convention, Ashaएं, the glimpse of a better tomorrow. So the rising sun shows that there is always no dearth of opportunity, and always we can prepare ourselves and focus in life so that we can achieve what we desire to achieve. Friends will be having the validity session within 5 minutes time, and then we'll have the cultural program. So kindly be patient for some time while we rearrange for the things. Thank you. Just before the dawn.
Hello. Yeah. Friends, in the last 2 days, we have seen the 4 technical session and we had the debate session also. Now we'll award the best paper presenters for each session. May I request our council colleague, CA Sonu Jain, CA Nitesh Moore, to kindly come on the dais. May I also request Nishchal Narayanam and Avinash Sancheti to also join us for the validity session, please. Sanjeev ji, please come for the validity. May I request Avinash Sancheti ji and Nishchal Narayan ji to kindly come for the validity session. In the first technical session, the best paper presenter for the first technical session is Vidya Balasundaram. May I request Nishchal to kindly present the certificate to Vidya. Photographer. All please join, please join. For the second technical session, Mayank B. Gosar is the best paper presenter. May I request Avinash Sancheti along with our council colleagues to kindly do the honors. For the third technical session, Neil Mukesh Parikh on forensic audit the future. May I request Nitesh Moore to kindly give the certificate. Friends, for the fourth technical session, Technology in CA Education, Mansi Kakkad. May I request CA Sonu Jain to kindly do the honors. And now the topic of the debate. I think it was a wonderful session in the pre-lunch session, and we got the best paper and the best debater and the second best debater, the runners-up. For the runners-up, we have Ankit Jalan. May I request Ankit Jalan to kindly come on the desk? And the winners, I think you can all guess. Can you guess? Akash Ganguly.
Thank you, my council colleagues and the dignitaries. Friends, this 2 days session would not have been possible though we have the culture program. I'm giving an informal kind of vote of thanks, so that because after the culture program there were hardly people to listen to the vote of thanks. So friends, these 2 days are not just 2 days, it has been 2 months. And I must really acknowledge the efforts of my entire office, CA Payal, CA Jyoti, Sushmita ji, Pradyuta, Amit ji, and to name all of them, Kabirda. The entire office was for this event for the last 2 months. We visited various venues to choose so that it could be the best convention ever. We tried our best to get the best dignitaries, and in recent times we do not remember when we had the governor as a chief guest. So you all are lucky to be part of this convention wherein we had the governor as a chief guest. The entire team of ICASA, the entire students, the volunteers have done a tremendous job. And all my council colleagues to make this event a great event. We have got the culture program after some time, and I think you'll be biting your nails while watching the culture program, because this time we have got a wonderful culture program, and out of the 11 branches, 6 branches are performing for the culture program, and out of the 11 branches, 9 branches gave the delegates for the culture program. Every year we used to have a culture program only from Calcutta, but this time EIRC is having a culture program because it is represented by entire region. I think for the first time we had about 70 delegates from outside Calcutta who have decided here at various guest houses to attend this convention. Whatever we could have done, we've tried our level best. There could have been mistakes in organizing the program. There could have been some failures also. We look forward to your suggestions. And now I would request just to wait for 5-10 minutes when we start the culture program. I would request to stay back and enjoy the evening. Thank you so much. I request Manish to please come over here. Please come over here. Friends, one man who has led this entire institute and make us all feel very proud about it. Give a big round of applause for him. Thank you, Manish, for the show. Thank you. Aren't you ready? Can't hear you. तुमको सुनाई दिया शाहीन? आवाज ही नहीं है, किसी ने लंच लग नहीं रहे किया। देखो यार, 2 दिन का टेक्निकल सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस सब खत्म हो गया। अब बस सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना है। तो आप लोग मस्ती करने के लिए रेडी हो? सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। यार कोलकाता, यहां से भी आवाज आ सकती है, पोटेंशियल है भाई, बोलो तो। लोग बिजी हैं। Can we have the AV of Ignatius, please? Can we have the AV of Ignatius, please? मेरे को नहीं लगता इतने क्राउड में हमें मजा आने वाला है। कल्चरल इवनिंग है ना? कल्चरल इवनिंग है ना ऋषभ? हमको नहीं लगता। कल्चरल इवनिंग है क्या? आप लोग यहाँ बैठे हुए क्यों हैं? स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स प्लीज एक बार इंश्योर कीजिए वहां से स्टूडेंट्स एक बार बैठ जाएं। ऐसे तो मजा नहीं आने वाला है, एकदम नहीं। एवी एवी एवी, वाह, आगे आगे आगे। Team players are requested, kindly please ensure that students are seated. Volunteers are requested to please be on the posted places. चलो कोई नहीं, जो लोग मिस किए करेंगे, एटलीस्ट बाकी लोग क्यों सफर करेंगे? शाहीन, what do you say? पॉइंट तो है, YouTube पे तो हम लोग ये डालेंगे ही नहीं, तो उनको दिखेगा कहाँ से? Exactly. तो एक बार यार, एक बार फाइनली आप लोग हम लोग को बता दीजिए कि Are you ready? एक बार और थोड़ा ऊंचा। सुनाई नहीं दे रहा। You ready? चलो, अब लग रहा है कि हाँ रेडी हैं। तो अगला 2 घंटा, 2.5 घंटा जितना मस्ती करना है सब करेंगे, जितने फ्रस्ट्रेशन निकालना है सब करेंगे, क्योंकि कल से एक नया दिन शुरू होने वाला है। With this, we present with you the first inaugural dance by Guwahati branch by Miss Rekha Singh. Can we have her on stage, please? We'll get her. She's getting ready. Please be patient and watch the video. You must believe when I say all of your tears will dry faster than the sun. Starting to
ಜೀಂತ ಜಗತ ಜೇಂತ ಜಣು ತಗತ ಜೀಂತ ಜಗತ ಜೇಂತ ಜಣು ತಗತ ಜಣು ತದೀಂತ ಗತಣು ದೀಂತ ತಗ ದೀಂತ ಜಣು ದೀಂತ ಕಲ್ತಾಂ ತಗ ದೀಂತ ಜೀಂತ ಜಗತ ಜೇಂತ ಜಣು ತಗತ ಜಣು ತದೀಂತ ಗತಣು ದೀಂತ ತಗ ದೀಂತ ಜಣು ದೀಂತ ಕಲ್ತಾಂ ತಗ ದೀಂತ ಜೀಂತ ಜಗತ ಜೇಂತ ಜಣು ತಗತ ಜಣು ತದೀಂತ ಗತಣು ದೀಂತ ತಗ ದೀಂತ ಜಣು ದೀಂತ Tajum, 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 tajum. Dream tajum ta tom tajum ta nam tajum ta takadi kukadi talang tom takadi kukadi talang tom takadi kukadi talang ekida taga tarikida taga ekida taga tam ekida taga tarikida taga ekida taga tam ekida taga tarikida taga ekida taga tam tatingina tom tatingina tom tatingina tom ekida tarikida ekida tam ekida tarikida ekida tam ekida tarikida ekida tam tatingina tom tatingina tom tatingina tom ekida taga tam ekida taga tam ekida taga tam tatingina tom tatingina tom tatingina tom tajinta tagata jinta janu dagata jinta jagata jinta थोड़ा सा और जोर से नहीं चिल्ला सकते क्या यार? गुवाहाटी ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव है। कोई Come on, गुवाहाटी से आया ही नहीं है ऋषभ, तो तालियां कौन मारेगा, है ना? गुवाहाटी वाले कोई नहीं है। कोई नहीं, कैलकाटा वाले तो है ना। We welcome people this way. Exactly. क्यों कोलकाता is known as the city of? नहीं दिया। City of? नहीं, इस बार सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। चिल्लाने के साथ अपने को चाहिए Round applause. Come on. Be a bit more sporty. This audience, I know, can be a quite more louder. Be a bit more louder, please. Be a bit more wild. We are the host city. Come on, prove yourselves. Now. यार वो बैक बेंचर वाले अभी भी वो ट्यूशन वाले फंडा वाले में क्यों जा रहे हैं? ट्यूशंस में ठीक है यार, लिखना पड़ता था, तब नहीं लिखते थे, बट अभी लिखना पड़ रहा है क्या? हाथ भी नहीं चलाना पड़ा, सुबह से सिर्फ सुन ही रहे हैं। हम लोग को याद है जब हम लोग कोई एक ऐसा कन्वेंशन अटेंड करते थे, एक ही अपना मोटिव रहता था, अगला दिन जब जाएं ऑफिस में गला बैठा हुआ हो, हाथ लाल हो सकता है ऐसा? नहीं होगा।
नहीं बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डर कल लग रहा है। रिजल्ट से ऋषभ डर लग रहा है सबको। समझा करो। ये बात है। तो ठीक है यार, कल तो लगने वाला है। या तो कल झूमोगे या फिर कल रोगे। कम से कम आज तो झूम लो, थोड़ा सा झूम लो। चलो, ये थोड़ा सा बेटर था। Coming to the next performance, we have Siliguri branch performing a small, we let them guess? Yeah, of What would you course. call that? A skit? A drama? Or something else? This is the first time Siliguri branch is showing us something very different, way different from what we expect. So please, kindly close your phones, hear properly, because this is not just a drama. It is one of the best acts which Siliguri has ever come up with. Could we? Yes. Yes, Can we have a lot of welcome the people from Siliguri team? here. Our chairman is from Siliguri. So please give him a round of applause. Oh! Can we have the play for the second for the Siliguri branch branch drama? Technicals, please get ready. Technical. Yeah, and of course, a Lights. small round of introduction for the play before it actually gets started. Yeah. आशाएं की उड़ान भरते यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अपनी कुर्सी की पेटी बांधे Open रखें। Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open. Pause it. एक जन को तो वहाँ रुको। Please cool down. This is not just the beginning or the end. आशाएं की उड़ान भरते यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें, क्योंकि ये यात्रा हम सबकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित है। यदि आप इस यात्रा के दौरान हंसी से लोटपोट हो जाते हैं, तो इस परिस्थिति में दूसरों को संभालने के पहले खुद को संभालें। यहाँ का तापमान बढ़ाने आ रहे हैं सिलीगुड़ी के चैंपियंस। गवर्नर के लिए किसको बोल के आप लिया है? अभी इसका जमींदारी कौन संभालेगा? अच्छा ठीक है, हम इसको 5 मिनट खा लेंगे। चेंजिंग के लिए से लिया था। हॉल में क्या लेना है लेने है, मेरे से पूछ के करिए। ठीक नहीं है। नगर वाला रूम ले लीजिए। राज्यपाल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ठीक है, इस बोली खराब नहीं है, बस हम लोग को सब Girls. Play. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. क्या करे क्या न करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या करे क्या न करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। भी है जोश में बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। सही ले क्या बोला फिर बोल रे। Pajama body info, आओ before, भाव ना खाओ से चिल्ला के गाओ, से दारू पीते जाओ।
रे अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, मुझे चैन न आए, चैन न आए, चैन न आए। यार रटमा, ओ रटमा, रटमा, रटमा। धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा, अरे रे धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। मैं नागिन 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 डांस नचना, मैं नागिन 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 डांस नचना। Session audit. Income tax return. State audit. VAT return. Internal audit. TDS return. TDS return. Audit. System audit. CA data. ROC. CS files. Intimation. Appeal. मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। Six men was a hell job boss. Was a brand of a hell top boss. Very dukes about the boss. Boss, boss. खून चूस ले तेरा, खून चूस ले, ब्लडी खूनी मंडे तू चाहे चूस ले। System audit. ROC. CS files. Intimation. Appeal. खुशी से खुद खुशी कर ले, खुशी से खुद खुशी कर ले। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल पल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, ए तेरे को उठाना है, बाजू वाला नहीं आएगा उठाने के लिए। बिना पायल के बजे घुंघरू, औरत है या भूतनी है, कांटा लगा तू डेटॉल लगा, चाहूंगा मैं तुम्हें शान सवेरे, दोपहर को क्या अलग सेटिंग है क्या, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन हिलने लगी, सजना यही प्यार है, ए लड़की प्यार व्यार कुछ ने भाग, भूकंप है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओ रटमा, रटमा, द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अजीब दास्तां
खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। देखता है तू क्या যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सर एक्स्ट्रा शीट मिलेगी? मथुरादास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। Why this colaveri, colaveri, colaveri day? Why this colaveri, colaveri, colaveri day? Only 1 minute remaining. नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। तेरे रिजल्ट का क्या बना भाई? हम सब अब तेरे रिजल्ट का क्या हुआ भाई? तो मेरे को आधे पेपर मेरी बाहर निकाल दिया, पास हो गया। अरे भाई निराश क्यों है? ये कि ICI का नोटिफिकेशन में अटेम्प्ट की डेट शीट आई है। चल के दर पे आया है मौका,
track I sent you, the whole track should be paid. Okay? Don't let the voice stop यार. थोड़ा सा और. थक गए. अब जाके लगा कि हाँ, कैलकाटा में सीए स्टूडेंट्स का कन्वेंशन हो रहा है. हमारे वजह से कुछ नहीं हुआ. सब क्रेडिट तो सिलीगुड़ी वाले ले गए. कोई बात नहीं, लेके तो गए कम से कम. ये दिल मांगे थोड़ा. चलो, जब मोर मांग ही रहा है दिल, तो आगे क्या है मिस शाहीन? आगे बता दे क्या? चलो बता देते हैं. डिमोटिवेटेड होकर कॉम्पिटिशन्स में बार-बार हार कर कोई कैसे वापस परफॉर्म कर सकता है? कर सकता है क्या? कर सकता है. यही कहानी हमें दिखाने आ रहे हैं कटक ब्रांच से हमारे सीए स्टूडेंट्स. वेलकम देम विद अ loud round of applause. Play. आप लोग का जा रहा है 6. हाँ. इसके ये कौन सा गया है? कटक ब्रांच गया ना? अभी थर्ड चल रहा है ना? हाँ, थर्ड चल रहा है. प्ले करना है क्या? बोलो. बस हो गया. प्ले करें? साउंड. तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं. हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं. आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा. मेरे अधूरे ख्वाब सारी निगाह कर दे तू पूरे आज. शादी का This is your forte, right? I want to see you doing something different. Can you? बचने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी. धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. बचने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी. धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. अपनी बस्ती रे साली बस्ती रे.
try and do common as well. Show me something which is out of the box. न वो अखियाँ रूहानी कहीं, न वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बात भी ना, न वो सजरी जवाब कहीं, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा न कोई, जग घूमे थारे जैसा न कोई। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। टेक्निक्स और डांस फॉर्म्स तो सीख लिए, पर लगता है डांस का मतलब नहीं समझा. डांस टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस. दिस इज योर लास्ट चांस. तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा मैं हो, एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा मैं। देखो सबसे बड़ी मुझसे दोस्तों कदम पे देखो जीत खड़ी, हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं है, मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का, सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का, मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जाते बगैर झाड़ दूंगा, हज पे मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा, पूरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। रंग मेरे माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही जैसे मैं छुपा तेरा एहसास, मैं तेरी चुनरिया लहराए, जब तक मुझे में है जरा सी जान, मैं तेरी चुनरिया लहराए, वंदे लगता है सब बहुत ज्यादा देशभक्ति मोड में आ गए हैं. ऋषभ, यस, कुछ रॉक एंड रोल करना चाहिए ना यार, कल्चरल लगना चाहिए. हाँ, रॉक एंड रोल तो तुमने सही कहा. वैसे एक बात बताओ यार, देशभक्ति था, अच्छा लगा? अच्छा लगा? पीछे से आवाज क्यों नहीं आ रही है? लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है. नहीं नहीं, लोग तो मुझे नजर आ रहे हैं. एक बार थोड़ा फ्लैशलाइट कम करना यार, आंख पे लग रहा है. लोग हैं ऑडिटोरियम में, नहीं सुनाई सिर्फ दिया, नहीं यहीं सुनाई पर है, दिया. मुझे तो सिर्फ यहाँ से आवाज आ रही है. अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं शाहीन, एक बार देख लेते हैं कि ऑडिटोरियम में कहाँ कहाँ लोग हैं. एक कंपटीशन करते हैं, राइट, सेंटर, लेफ्ट, और देखते हैं किसमें कितना दम है.
जरूरी सी बात है, कैलकटाई वाले होंगे सिर्फ इधर, इधर वाले थोड़ा सा एक बार वापस करना तो है ही नहीं लोग। थोड़ा दम आया सेंटर, वापस। चलो अब इनको रॉक एंड रोल मूड में लाने के लिए क्या करें ऋषभ? रॉक एंड रोल वाले गाने बजाते हैं। तालियां से कुछ नहीं होता, रॉक एंड रोल में कुछ चाहिए। मेरे को नीचे किसी ने बताया कि सिर्फ लड़के ही नाचेंगे क्या स्टेज पर, लड़कियों में दम नहीं है। बात तो सही बोली लड़की ने। तो मुझे 3 जन ने कंप्लेन करा, शाहीन कल्चरल इवेंट है, एक लड़की नहीं, तुम लोग इतने डिमोटिवेटेड हो गए हो कल के रिजल्ट्स के लिए। ऐसे है क्या लड़कियां? चलो लड़कों को छोड़ो, इस बार लड़कियों में दम देखते हैं, लड़कियों में कितना दम है, या लड़कियां है भी या नहीं है? लड़कियां नहीं है, सब चली गई। नहीं, साड़ी की साड़ी इधर बैठी हुई है। नहीं मैंने यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ कोई है भी कि नहीं? बीच में तब कोई नहीं है, देखो बीच में कोई नहीं है। चलो कोई नहीं। अब आप लोगों के सामने प्रस्तुति देने आ रहे हैं राउरकेला से, इतना शुद्ध हिंदी। अरे यार अपने सीए स्टूडेंट्स लोग, देख एक सीधा सा कहावत है, शायद तुमने ही बहुत जगह सुना होगा, लोग कहते हैं कि सीए स्टूडेंट्स ना पढ़ते आर्टिकलशिप करते इतने घिस जाते हैं, इतने पक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि टैलेंट के लिए जगह ही नहीं रहता। और देखो अभी तक 3 परफॉर्मेंस तो हो ही गए, और देख के लग रहा है यार सीए स्टूडेंट्स हैं, अपने लोग भी तो सीए स्टूडेंट्स, अपने अंदर भी टैलेंट है। क्यों? हमारे अंदर टैलेंट कहाँ है? हम लोग तो खोटे सिक्के हैं ना, जो सब जगह चल जाते हैं। बात में तो दम है यार। चलो कोई नहीं, एक और खोटे सिक्के चलाने राउरकेला with a thunderous round of applause. Guys, keep your hands together. Music. एक बार म्यूजिक प्लीज बंद कीजिए। अच्छा, let the There was a participants take technical position error. first. Please be quiet. There was a technical error. Let 3. the participants take their positions first and then we'll play the music. Let's start. 3, 2, 1, play. दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, दिल को 1000 बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार, प्यार है धोखा। ब्यूटीफुल कर गई देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तुम्हें गरम मामला, बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए, जो तू दिल्ली ले है लंदन जैसे रवीना टंडन, जो तू दिल्ली ले है लंदन जैसे रवीना टंडन, वो लगाने आई है बंधन, गोली चल गई धाए, अगर विलाती एक रहती, मगर विलाती एक रहती, टशन दिखाती फुल, और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल।
Salve
28 and 47 with. समाया का भी है मनीष क्रिएशन का वो स्टार्टिंग में चला अब आया मजा, वही हम लोग बोले यार।